Welcome all viewers from my side, myself Mandal from Management System Consultancy. Today we will discuss on the topic of legal requirements for set up a business. Basically, business तो हम लोग को सेट करना है, मगर लीगल प्रोविजन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वही हम लोग चर्चा करेंगे आज. ओके, सो नाउ द इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब लीगल क्यों क्यों लेना चाहते, क्यों लेंगे हम लोग बेसिकली. Okay, legal compliance is essential to avoid the fines and legal penalties, of course, because it is government licensing है. Ensuring smooth business operation, it helps to build up trust from customers, investors, protecting business reputation. Compliance promotes ethical practices, safeguards employees' rights and safety. Ultimately, it contributes to long-term sustainability and success to the business. That is the main beneficial point. नाउ बिजनेस स्ट्रक्चर वाइज अगर सोचेंगे हम लोग, बिजनेस स्ट्रक्चर वाइज किस किस टाइप का हम लोग फॉर्मेशन वाइज बिजनेस कर सकते हैं. सो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन. सो ये दोज आर द थ्री बेसिकली मेन बिजनेस. कॉर्पोरेशन हम लोग बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं थ्रू दिस वे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन. ओके, बेसिकली हम लोग स्मॉल वाइज आज दो लेके हम लोग चर्चा करेंगे. फैक्टर्स टू कंसिडर हाइलाइट्स फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द choice of business structure such as liability, taxation, and ease of information. Now, first one is the sole proprietorship. Okay, sole proprietorship is the smallest form of business structure owned and operated by one person. उसका क्या पॉइंट आउट हम लोग एडवांटेज दिए, डिसएडवांटेज किए हम लोग पॉइंट आउट. इजी टू स्टार्ट, कोई किसी भी टाइम की ओनरशिप है, अकेला का है तो कोई भी इजी टू स्टार्ट. फुल कंट्रोल ओवर द, बिकॉज खुद पर्सन वाइज है. टैक्स बेनिफिट्स खुद का ही है. फ्लेक्सिबिलिटी है. ओके, द ओनर कैन क्विकली अडॉप्ट द चेंजेस एंड मेक डिसीजन. सो दोस आर द एडवांटेजेस. डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी. ओनर पर्सनली लायबल फॉर ऑल, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, उसका ऊपर ही सब कुछ है. दैट्स व्हाई अनलिमिटेड लायबिलिटी. फंडिंग चैलेंजेस हो सकता है, सस्टेनेबिलिटी का चैलेंजेस हो सकता है, लिमिटेड ग्रोथ हो सकता है, बिकॉज पर्सन डिपेंडेंट है. ठीक है, तो दैट इज द कुछ पॉइंट आउट है फ्रॉम सोल प्रॉपर्टीज का तरफ से. ना पार्टनरशिप different types of partners. General limited liability, their characteristics and legal implications. This is the under the partnership form. General partnership (GB), all partners share equal rights and responsibilities. Each partner can make decisions and sign contracts and on behalf of the business. Legal implication: limited liability, joint and several liability, limited partnership. Legal implications हो सकता है. Then because have general partners have unlimited liability for the business debits. Then आपका point number 3 में limited liability partnership फॉर्म भी हो सकती है, LLP जिसको कहते हैं. And legal implications. Okay, partners are not personally liable for the business debits except for their own main practice and negligence. ये भी हो सकता है. Okay, partnership. Now, next is the business name and registration. business name को जो नाम ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम लोग का जो लीगल प्रोविजन है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट प्रोटेक्शन, रजिस्टरिंग जो योर बिजनेस क्या थ्रू बिजनेस नेम रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग बिजनेस लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन फॉर टैक्सेस. दो ज्यादा मेन एरियाज. नाउ बिजनेस नेम एंड रजिस्ट्रेशन में क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, रेवेन्यू जनरेशन, ब्रांड रिकॉग्निशन, लीगल प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन. Those are the point, importance of the protecting intellectual property. Now procedure उसका क्या है कि procedure for obtaining trademark. ट्रेडमार्क का प्रोसेस कैसे हम लोग कर सकते हैं? Conduct a trademark research. First one is important because trademark आपका नेम रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रेड जो आप ट्रेड करते हो. So before applying, ensure your trademark is not similar to existing one. दूसरे के साथ सिमिलर ना हो. ये this is the conduct a trademark सर्च करके ही फिर हम लोग अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज वो फाइल नेक्स्ट टाइम अटक जाएगा.
फाइल एंड देन आप फाइल एप्लीकेशन फाइल करो, एग्जामिनेशन थ्रू गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, then publication registration. Procedure for obtaining copyrights: create a original work जो इसका copyright करना है, register with the copyright office, submit an application, receive a certificate. So this is the few point out from those topics. License and permits, types of license and permits, categorize license and permit based on industry. Of course, industry wise licensing में differentiate हो सकता है, location and specific activity wise. Obtaining necessary permits online, the application process, required documents and potential fees. Because अभी का जमाने मोस्टली ऑनलाइन बेस आउटलाइन ऑनलाइन हो चुका है, तो हम लोग आउटलाइन करना है एप्लीकेशन प्रोसेस को, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है एंड फीस को सबमिट करना होता है. Industry specific requirement: address any unique licensing permit requirements for different industries, जैसे फूड सर्विसेज होता है, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन. तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो सकता है लाइसेंसिंग परमिट में. ओके, नाउ टैक्सेशन, tax obligations. Considering the different types of taxes, business may be subject to income tax, sales tax, property tax. Those are the under the tax obligation. Tax filing requirement: discuss frequently and procedures for filing tax returns. Tax planning strategies: provide tips for optimizing tax liability and minimizing tax burdens. तो taxation का अंदर में सब आता है. Now आपका zoning and land use regulations, zone wise, zone कुछ लॉस हो सकते हैं, जोन वाइज अलग अलग स्टैट्यूट लॉ रेगुलेशंस. ऑब्टेनिंग जोनिंग परमिट्स हो सकता है, लैंड यूज रेस्ट्रिक्शन हो सकता है. तो ज्यादा जोनिंग एंड लैंड यूज रेगुलेशंस. नाउ आफ्टर बिजनेस का स्टार्ट करने टाइम क्या क्या हो सकता है कि लेबर लॉज, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी से एम्प्लॉयमेंट लॉज, कवर की लेबर लॉज इंक्लूडिंग मिनिमम वेज, ओवर टाइम एंड वर्कर्स compensation. Those are the employment laws. May employment contract discuss the importance of detailed employment contracts and essential terms to include employee benefits. Those are the labor laws and employment contracts. Okay. Now, one vital thing: environmental regulations. Especially this point, regulation is applicable for the कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बाल्क इंडस्ट्री लगाना है तो आपको ये एप्लीकेबल होता है. सर्विस इंडस्ट्री में जनरली नहीं होता है. एनवायरमेंटल रेगुलेशंस. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन: प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, अवॉइडिंग लीगल पेनल्टीज, रेपुटेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. दोस आर द पॉइंट्स. नाउ protecting of the environment में consequence of compliance, financial penalties, legal action, reputational damage, operational disruption हो सकता है, क्योंकि अगर आप वायलेट कर रहे हो तो कुछ लॉकआउट भी हो सकता है, तो डिस्ट्रप्शन हो सकता है ऑपरेशनल. व्हाई दिस प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट? क्यों? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लीगल कंप्लायंस, पब्लिक ट्रस्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी. दोस आर द पॉइंट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल रेगुलेशंस. एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में पर्पस और एक भी होता है कि अगर बाल्क इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA. आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो सकता है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, मिटिगेशन मेजर्स, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लीगल कंप्लायंस. नाउ हम लोग को देखना है कि व्हेन EIA इज रिक्वायर्ड, कब EIA में जरूरत होता है, कब. हम जैसे बोल रहे थे, लार्ज स्केल infrastructure projects, industrial development, urban development, resource extraction projects in sensitive areas. On this time, environment impact assessment is required. Okay. Now, ongoing compliance. Ongoing compliance में आता है जो आपको मेंटेन करना होता है, जैसे annual reporting, ये कोई भी सर्विस के लिए एप्लीकेबल होता है. Renewing of licenses and permit. आपको ये भी पता होगा कि ट्रेड लाइसेंस जैसा है वो ईयरली 3 ईयर 5 इयर्स इस हिसाब से लाइफ टाइम के लिए मिलता है, तो रिन्यू करना है आफ्टर टाइम के बाद उसको. एंड परमिट्स, स्टेइंग अपडेटेड एंड लीगल चेंजेस. कभी कभार लीगल चेंज में कोई नया प्रोटोकॉल आ रहा है, उसको भी बारे में जानकारी लेना चाहिए. सो दोस आर द ऑनगोइंग कंप्लायंस. सो दैट इज द थिंग. एंड दिस द फॉर कंप्लीशन ऑफ द टुडेस टॉपिक. नाउ वीडियोस को आप लोग
लाइक कीजिए, हम लोग को चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग काफी सारा टॉपिक का ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू व्यूअर्स।